Hi everyone, good afternoon to all of you. Welcome to the Power BI workshop session. I hope everyone excited for this session, right? So I would like to introduce myself, guys. My name is Bijan Narayan Singh, founder and CEO, skilledUp Intelligence Private Limited. I have more than 10 years of experience in data science domain, guys. Data science, data analytics, and business analytics domain. If you talk about my expertise in data science, data analytics, business analytics, and MySQL, Python, Power BI, Tableau, R, machine learning, deep learning, and many more things. Okay. In today's session, guys, we'll talk about पावर बीआई के बारे में बात करेंगे, राइट? दिस वन इज मिक्सअप सेशन, इंग्लिश एंड हिंदी का कॉम्बिनेशन होगा. इफ एनीवन हैव इशू, प्लीज टेक्स्ट मी. आई विल ट्राई टू मिक्स बोथ लैंग्वेज, राइट? सो आज हम पावर बीआई को पढ़ने वाले हैं. पावर बीआई होता क्या है, व्हाई वी नीड टू लर्न पावर बीआई, राइट? सो बिफोर दैट यू आल्सो नीड टू नो अबाउट द स्किल्ड अप. स्किल्ड अप क्या है, व्हाट इज स्किल्ड अप, स्किल्ड अप का एम क्या है, why you are here, what is importance for this session, right? So this session is completely 2 hours program, 2 घंटे का program है, right? We'll try to cover each and every part. We'll try to understand each and every part. We'll try to create one smart dashboard for your better understanding, right? And also, now I would like to move our first slide. Who we are, हम है कौन, यानी स्किल्ड अप है क्या. तो गाइस, ये हमारी स्टोरी शुरू होती है 7 year बैक. वी स्टार्टेड आवर ड्रीम, right, to make an educational platform that impacts technical IT education at an affordable fee structure across the world. But initially we are trying to build the same in India. That means for our nation, right? This program, all program is accessible to everyone, no matter it's offline or online. After each passing day, this stream converted into a mission. We are bootstrapped. Gradually, we will make a path to complete this stream with the help of our multiple things. So what is our mission, guys? You guys need to understand skilledUp believes in transparency in business with the customer and client satisfaction, and ready to make a crop of skilled use and eliminate unemployment at any cost. So our mission is simple and clear. What is our mission? Basically, what we are trying. There is a biggest problem. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? सपोज आई वुड लाइक टू टेक माय एग्जांपल, राइट? For sorry, but yes, for your better understanding, I have done graduation in computer science field, but that time I don't have any idea कि हमें करना क्या है. I move in Delhi NCR. After that, some time back, I realized कि हाँ, I'm missing something. What is the problem? Problem is statement that is that कि mentorship जो होती है, यानी हमारी mentorship हमें अगर नहीं मिल रही है प्रॉपर इनिशियल लेवल से, अगर mentorship नहीं मिल रही, that is the biggest challenge for all students, right? और साथ में अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं, that is also very big challenge for all of you. So that's why we are trying to provide training to all of such a student जो अवेलेबल नहीं, राइट? जो लोग ट्रेंड नहीं हो पा रहे. देयर इज अ फ्यू थिंग्स. किसी के पास लैपटॉप नहीं है, किसी के पास
नॉलेज नहीं है कि हाँ क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना चाहिए। वी आर ट्राइंग टू बिल्ड ऑल दीज थिंग्स एंड ऑल्सो इन फ्यूचर वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू बिल्ड स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल। So I would like to move today's topic, what we will cover, try to cover. Basically, this one is a very short period. हम कवर करने की कोशिश करेंगे सब कुछ, ईच एंड एवरी पार्ट हम सब कवर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड गाइस, बिजनेस इंटेलिजेंस है क्या, पावर बीआई इज दैट मीन्स बिजनेस इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट होता क्या, व्हाट इज बीआई कॉन्सेप्ट, राइट। हमें ये समझने की कोशिश करें। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, क्या है, इज दैट ऑल्सो कॉल्ड गाइस एमएस पीबीआई इंट्रोडक्शन। तो बिफोर गोइंग मूव फॉरवर्ड आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी पर्सन गाइस कि अगर आप 2 घंटे हमें दे रहे हैं, आई विल ट्राई टू कीप मैक्सिमम थिंग्स टू ऑल ऑफ यू। आपका 2 घंटा बहुत प्रीसियस आपके लिए, अगर आप वो दे रहे हैं, आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी। सो आफ्टर दैट we also connecting power bi with different data sources। क्या हम पावर बीआई को डिफरेंट डेटा सोर्सेज से कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक एमएस एक्सेल सीट हो गई, गूगल सीट हो गई, या किसी वेब पेज से स्क्रैप कर सकते हैं, एसक्यूएल से कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, कहीं किसी बिग डेटा टूल से कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। आफ्टर दैट वी मूव पावर बीआई क्वेरी फॉर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। वी नीड टू अंडरस्टैंड पावर बीआई क्वेरी क्या है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कैसे करते हैं। देन वी मूव डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग क्या होता है, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, कि डेटा मॉडलिंग क्या होता है, व्हाई वी नीड टू डू दिस, राइट। देन विल मूव रिपोर्ट्स इन पावर BI, यानी वी आर देन वी आर ट्राइंग टू बिल्ड वन रिपोर्ट फॉर ऑल ऑफ यू, कि रिपोर्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं, रिपोर्ट्स होती क्या है, रिपोर्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। उसके बाद हम रिपोर्ट्स एंड विजुअलाइजेशन के टाइप्स पे बात करेंगे, डैशबोर्ड्स इन पावर बीआई पे बात करेंगे। देयर इज मल्टीपल थिंग्स व्हिच आई मेंशनड हियर, आई विल ट्राई टू ऑल दीज थिंग्स, ट्राई टू कवर ऑल दीज थिंग्स, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हाट इज बीआई, बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट गाइस कि व्हाट इज डेटा। पीआई कॉन्सेप्ट की अगर बात हो रही है, तो उससे पहले अगर डेटा की बात ना हो, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, अनफेयर हो जाएगा। फिर अगर आप बीआई की बात करो और डेटा की बात करो, और डेटा के साथ साइंस की बात, राइट। अगर हम पावर इज दैट मीन्स पावर बीआई की बात कर रहे हैं, तो पावर बीआई की जरूरत क्यों पड़े, व्हाई पावर बीआई इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, इन इंडस्ट्रीज, राइट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो आई वुड लाइक टू को आस्क क्वेश्चन, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज डेटा, डेटा होता क्या है गाइस। कैन यू प्लीज ट्राई टू टेक्स्ट मी if you have any idea about that, what is data, data hota kya hai, please try to text me. If someone join through the YouTube channel, you need to share over there, text me. If someone here on Zoom, also try to text me, that is very helpful for me, right. Okay, thank you. So thank you so much. I got a few response, that is very good. So data, यानी आप किसी से बात कर रहे हो तो कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर, तो जब वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, दैट इज कॉल्ड। आप कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हो या ऑफलाइन फॉर्म फिल कर रहे हो, राइट, फिल सभी लोग करते हैं। तो जो आप इंफॉर्मेशन उस फॉर्म में देते हो, वो इंफॉर्मेशन कहीं पर स्टोर होती है, दैट इज कॉल्ड डेटा। यानी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज दैट कॉल्ड डेटा। अगर आज के डेट में क्या हो रहा है, वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा जो है
हमारी सोसाइटी जो है जनरेट करी। सोसाइटी का मतलब ये मत समझ लेना कि किसी सोसाइटी, पर्टिकुलर सोसाइटी यानी किसी स्पेसिफिक वे की बात कर रहा हूं। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट जो हमारे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज दैट कॉल्ड सोसाइटी। जो हमारी पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन बार बार रिलीज कर रही है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो इमेज में हो सकता है, टेक्स्ट में हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। दैट मीन्स इन एनी वे जो इंफॉर्मेशन लीव हो रही है, दैट इज कॉल्ड, राइट। इज दैट क्लियर? आई होप इज दैट क्लियर कि डेटा होता। तो नाउ आई वुड लाइक टू मूव कि पावर बीआई इज दैट मींस बीआई इंटेलिजेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल होता। BI is that means business intelligence is the process of converting raw data in meaningful information, guys. Is set up process architecture and technologies that drives profitable business access। यानी कि आपके पास जो रॉ डेटा है, रॉ डेटा को बीआई टूल क्या करता है, कन्वर्ट करता है किस फॉर्म में, एक यूजफुल एंड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर। तो उससे क्या होता है कि जो बिजनेस एक्शन यानी जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं टॉप पे आपके बैठे हुए, वो उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते जो उनकी जरूरत की चीज होती, राइट। उस जरूरत की चीज से अपना एक्शन प्लान। I hope everyone understand. Now, BI is that means business intelligence is a method of collecting, storing, and analyzing data from business operations or activities to optimize performance। यानी कि जो हमने वही बताया है, यानी एक मेथड है कलेक्ट करना, स्टोर करना, एनालाइज करना। दैट इज द पार्ट ऑफ बीआई, is that means business intelligence tool, guys। Okay, BI is that means business intelligence has a direct impact to the organization, guys। ऑर्गेनाइजेशन को बीआई इज दैट मीन्स बिजनेस इंटेलिजेंस टू डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। उससे फाइनेंशियल मॉडल भी बन सकता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, यानी देयर इज अ मल्टीपल थिंग्स just because of BI is that means business intelligence। आप लोग there is a few people who are from कॉर्पोरेट सेक्टर, जिनको आइडिया होगा, जो एमएनसीज में काम करते होंगे या कहीं पे भी जॉब करते हैं, दे हैव आइडिया अबाउट, राइट। तो अगर उस आइडिया की बात करूं तो पहले क्या होता था, एमआईएस एग्जीक्यूटिव होता था, इफ यू रिमेंबर। एमआईएस एग्जीक्यूटिव की अगर जॉब रोल आपने सुना होगा, तो वहां पे क्या होता था, 100 लोगों की टीम है, 50 लोगों की टीम है, एक एक्सेल का बंदा है जो एक्सेल पे काम करता है, उनकी रिपोर्टिंग करता है, राइट। उसकी 30 से 35 हजार या 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार सैलरी। अब उसी को रिप्लेस डेटा साइंस और एनालिस्ट एंड बिजनेस एनालिटिक्स ने कर दिया। कैसे? वो एक्सेल सीट पे काम कर रहा है, एक्सेल सीट की लिमिटेशन होती है। जब एक वास्ट अमाउंट में डेटा होता है, ह्यूज डेटा होता है, बिलियंस एंड मिलियंस में डेटा होता है, दैट टाइम क्या होता है, दैट टाइम इज दैट इंपॉर्टेंट कि वो एक्सेल सीट से तो नहीं हो सकता है। अगर वो होगा तो किसी टूल से होगा, या तो आप उतने एमआईएस एग्जीक्यूटिव हायर कर लो। सपोज आपको 1,000 लोगों को मैनेज करना है, दैट टाइम यू नीड टू हायर एटलीस्ट 10 to 20 एमआईएस एग्जीक्यूटिव। अगर एवरेज सैलरी किसी की 30,000 इज दैट मीन 3 lakhs to 6 lakh उसको सैलरी पे करनी पड़ रही है। बट अगर वहीं पे एक डेटा साइंटिस्ट और एनालिस्ट है जो लाख से 1.5 लाख रुपए या 50 से 60 हजार, 70 हजार में मिल जाएगा, या 40 हजार में भी मिल जाएगा, वो तो सारा कुछ कम कर सकता है, सारा काम कर सकता है। इज दैट मीन्स जो मैन पावर थी वो रिड्यूस। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, किसी भी कंपनी में काम हो रहा है, सपोज वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, एमएनसीज कंपनी, या किसी भी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, पहले मैनुअली काम होता,
उसके बाद मैन पावर लगने लगे। कैसे मैन पावर? टेक्नोलॉजी, यानी कंप्यूटर पे काम करने लगे कि जो फाइल मैनुअली फिल की जाती थी उसके बाद वही कंप्यूटर पे मैनुअली फिल होने लगी। तो थोड़ी सी स्पीड मतलब इस परफॉर्मेंस increases, is that little bit. But after some time, guys, you guys need to understand, now data science is came, right? Data science reduce all the manpowers. So that means every day reduce करता हुआ चला जा right? So I would like to move importance of Power BI. What is importance of Power BI? That first one is KPI, that is called key performance indicators. After that, process benchmarking. Process benchmarking is also most important, right? Then driving sales, business problems, in demand, job every day. There is multiple things which we discuss, right? So first of all, you also need to know what is data warehousing and business intelligence. What is data warehousing and business intelligence? What is this? ये होता basically, data warehouses convert unwidely data from multiple sources into an easily understand format that is both user friendly and consumable with the little or no modification. The most business intelligence applications use data collection from a data warehouse. Data warehouse कुछ is nothing but is that platform जहाँ पे आपका data store होता है. Is that platform where you store your data, right? And the concept of BI and data warehousing together known as BI slash data warehousing is that means business intelligence and data warehouse. So guys, you guys need to understand. Thank you so much, Sazia. Okay. So data warehousing helps in achieving a successful BI program by facilitating several key aspects of reports and data analytics. Right? Importance. What is importance of data warehousing? इसका importance क्या होता है? You guys also need to understand. Basically, enhance business intelligence, that is important. Promises data quality before it is used for report. Is that means if you have Power BI, guys, अगर आपके पास Power BI है, वो डेटा की क्वालिटी को इंश्योर कर, right? It will ensure your data's quality. So easier and more efficient decision support query writing. Is that very easy to understand? Is that very easy to take decision what we need to do? Right? Enable decision makers and business users to have a timely access to the data. How? Just you need to make a one report. After that, you need to schedule the same. Every day, particular the same report will be delivered टू द एंड यूज. यानी आपने एक रिपोर्ट बनाया, रिपोर्ट बनाने के बाद उसको शेड्यूल कर दिया, वो रिपोर्ट एवरी डे एंड यूजर को डिलीवर हो जाए. राइट? आई होप इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. If anyone have any doubt, query, concern, I am also ready to take. Now, tools and technologies in business intelligence. What is tools and technologies is required in business intelligence? Business intelligence is that means BI tools are which utilize a set of methodologies and technologies to prepare, present, and help analyze data. A simple सी बात करें
बिजनेस इंटेलिजेंस को अगर आप अप्लाई कर रहे, इफ यू वांट टू अप्लाई बिजनेस इंटेलिजेंस, दैट टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड you have any single visualization where you perform all the operations, schedule your report and all. I'm not talking about right now Power BI, I'm talking about any visualization. If you have any single visualization tool, it means you will do anything, right? So now the point, what is Power BI? What is Power BI? What is Microsoft Power? Basically, Power BI is business analytics solution that lets you visualize the data and share the insight to the consumers, stockholders, and business owners. पावर बीआई एक बिजनेस एनालिटिक्स सोल्यूशन है जहां पे आप अपने डेटा को विजुअलाइज कर सकते हो विथ यूजफुल इंफॉर्मेशन में और उसको शेयर कर सकते हो स्टॉक होल्डर और एंड यूजर आर योर रिस्पेक्टेड पर्सन के पास, राइट? देयर इज अ थ्री कंपोनेंट इन पावर बीआई। पावर बीआई में तीन कंपोनेंट होते हैं गाइज। फर्स्ट वन इज पावर बीआई डेस्कटॉप। जो फर्स्ट होता है पावर बीआई डेस्कटॉप होता है, जैसे ही आप पावर बीआई ओपन करेंगे ओपन। सेकेंड वन इज पावर बीआई सर्विसेज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड SaaS, जहां पे आप अपने रिपोर्ट को शेड्यूल करते हैं। यू विल डू ऑल द मॉडिफिकेशन और थिंग्स ओवर द पावर बीआई सर्विसेज। लास्ट वन इज पावर बीआई मोबाइल एप्स, यानी पावर बीआई मोबाइल ऐप है तो यू विल ऑल्सो सी योर रिपोर्ट। इज दैट मीन्स अगर समराइज करने जाएं तो यू कैन ऑल्सो सी द गाइस व्हाट इज द पावर बीआई। See, Power BI begins by connecting the data to data source and building a report in Power BI desktop, right? You then publish that report from Power BI desktop to the Power BI service and share it end users in the Power BI service and mobile devices can view and interact with the report. This workflow is common and shows how the three main Power BI elements, components, one another. यानी जो मैंने बताया, पावर बीआई पे आप अपनी रिपोर्ट बनाए, उसको शेयर कर दिए सर्विसेज पे, वहां से शेड्यूल हो जाएगी, डिलीवर हो जाएगी। पावर बीआई पे या तो व्यू कर सकता है या तो पावर बीआई डिवाइस मोबाइल डिवाइस पे व्यू कर सकता है कोई भी एंड यूज। सो गाइस, पावर बीआई का आर्किटेक्चर क्या होता है, यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। तो आपके पास यू हैव डेटा पॉइंट, you need to extract this data. You have data, right? Collected data I am talking about. There is a possibility this one is available on text format, CSV format, PDF format, or XLS formats. There is also available on anywhere, anywhere, warehouse, SAP, are also through web scraping. You are trying to extract data, यानी आप डेटा को पावर बीआई में लाने की कोशिश कर रहे हो। जो आप कोशिश कर रहे हो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप डेटा को ले जाते हो पावर बीआई डेटा वेयर हाउस, यानी डेटा वेयर हाउस में यू नीड टू सेंड द डेटा। दैट इज कॉल्ड इन पावर बीआई क्वेरी एडिटर। दैट इज कॉल्ड पावर बीआई क्वेरी एडिटर।
right? After that, you need to do all the exercise over there. You need to remove all the errors, and then you need to came on Power BI desktop and make the report. That is called data visualization, guys. This part is called data visualization. After that, you need to go on Power BI services and send to the end user. I hope is that clear to all of you? Yes or no, guys? Is that clear? Is that clear for all? Thank you. So, what is the Power BI process? Power BI का process क्या होता है, guys? We also need to understand the same. If we understand what is the Power BI process, we will do all these things, right? So you guys need to understand there is data connection, data transformation, data modeling, data visualization, and data reports. Right? There is two and one process that is called Power BI process. Right? One second. So, what is Power BI process और data connection? Power BI का process क्या है और data connection क्या है? So, you guys need to understand Power BI का process क्या है. You can talk to any data source with highly simplified Power BI interface, right? Power BI can connect to any source to bring meaningful information, meaningful insights to the end user. Is that means these are the data source? These are the data source, guys. जहां से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो पावर बीआई में, वेयर हाउस में ले जाकर के रिपोर्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हो. Right? I hope is that clear to all of you. Yes or no? Please reply me on chat section. That is very helpful for me as well. So it is simple to import any custom file into a Power BI, guys. आप किसी भी फाइल को Power BI में इंपोर्ट कर सकते. Connecting data from multiple data sources can be achieved anyone who is new to Power BI. Is that means, guys, कोई भी जो न्यू भी है पावर बीआई में वो डेटा को कनेक्ट कर सकता है और अपनी रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर सकता है. राइट? गिव मी 1 second. So now I would like to move another one is Power BI process. That is also called transformation. Power BI का process क्या है और transformation. What is data transformation? The post data loading, it should undergo pre-processing as per the requirement. As that means process is known as data shaping or data transformation. यानी आप जब किसी से कनेक्ट करते हैं, सपोज दिस वन इज एक्सेल फाइल, ये एक्सेल फाइल है, इसको पावर बीआई से कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. और कनेक्ट किससे कर रहे हैं? डेटा वेयर हाउस में भेजने के लिए. दिस वन इज कॉल्ड डेटा वेयर हाउस. डेटा वेयर हाउस process is known as data shaping or data transformation. Involves renaming tables and columns, changing the type of data, numbers, text, modify rows, and so on. Right? Power BI process or data modeling. What is the Power BI process and data modeling? Enhance the data to get more accurate
the insights and analytics, right? Achieved by working, adding sample numbers and is that means ये आपका डेटा सोर्स है, राइट? इसको जब आप लाते हो यहां पर, इज दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट ऑल दीज टेबल्स विथ ईच अदर, यानी एक दूसरे को टेबल से कनेक्ट करते हो, राइट? दैट इज कॉल्ड पावर बीआई डेटा वर्कफ्लो। अगर किसी को माई आता होगा तो उसमें ज्वाइंस होता है। इसपे यहां पे इस प्रोसेस को डेटा मॉडलिंग भी बोल सकते हो आप, राइट? Then it's data warehousing, data visualization, and many more things. Now I would like to move Power BI data visualization. You need to see this chart, guys. Heart of Power. Playing with variety of visualization type. There is multiple things. यानी कि अगर किसी भी बिजनेस को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए डेटा से रिलेटेड, that means they need to use any visualization tool. उसमें आपका पावर बीआई भी हो सकता। they need to make a report as per business requirement, बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो रिपोर्ट्स बना सकता है। I hope was that clear to all of you. There is any confusion, anyone? I am ready to take. Okay, so डेटा रिपोर्ट्स क्या होती है? रिपोर्ट्स कैन बी पब्लिश बाय एक्सपोर्टेड सिक्योरली, यानी कि रिपोर्ट्स को आप अपने पब्लिश कर सकते हो जो आपने वन टाइम, एक काम वन टाइम होता है। एक बार आपने रिपोर्ट बनाया, यू नीड टू क्रिएट वन टाइम रिपोर्ट, आफ्टर दैट यू नीड टू शेड्यूल द सेम रिपोर्ट। आप उसी रिपोर्ट को शेड्यूल करते हो and particular this report delivered to each and every person on daily basis on punctual times with updated report. You don't need to change anything over there then, right? If any additional changes required, that time you need to visit to do the change over the report. Otherwise you don't need to visit, right? I hope is that clear to all of you. So this one is the conclusion। आपके पास यहाँ पे, यहाँ से डेटा को आप उठाते हो, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके लाते हो, यहाँ पे सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए एंड यूजर को आप शेयर कर देते हो, चाहे वो डेस्कटॉप से देखे, टैबलेट से देखे, मोबाइल से देखे, या किसी के पास एप्पल फोन हो उससे देखे। दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू, राइट? एप्पल फोन का मतलब फोन, एप्पल खाने वाले की बात नहीं कर रहा। So there is a component visualization, data sets, reports, and dashboards and tiles, right? Now, this one is overall about the PPT. I would like to move on real-time work. यानी हम अब डेटा पे काम करेंगे, रियल टाइम डेटा पे काम करेंगे। जो हमारे पास डेटा होगा, we'll try to work over there. There is any confusion till now? Anyone, guys? If you have any confusion, query, concern, please go ahead. I am ready to take. Anyone, guys? Open to all, completely open to all. If you have any query, concern, I am ready to take. Now, I would like to move the scene. I would like to hide this one first. And sorry. So I have three data set, guys. One is order details, version 1, store cities and product hierarchy. यानी कि हमारे पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है with three tables. Just you need to assume. First one is called order details. What we have in particular this data set, guys, you need to see here. There is a product ID. You need to suppose थोड़ा सा एरिया पे जाते हैं, एनालिटिक्स समझने की कोशिश कर।
सपोज यू आर ट्राइंग टू बाय एनी सिंगल प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की अगर बात करें, सपोज यू आर गोइंग टू बाय वन पेन, उस पेन के अगेंस्ट एक प्रोडक्ट आईडी क्रिएट हो, राइट, और वो किसी स्टोर पे है, तो उस स्टोर की आईडी की बात हो रही है, हर एक स्टोर की एक आईडी। सपोज आप गांव के उसकी बात मत कर लेना जो आपके नुक्कड़ पे होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दिस वन जहां पे रजिस्टर्ड होते हैं, राइट। तो यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रोडक्ट आईडी हो गया, स्टोर आईडी हो गया, एंड ऑल्सो कोई आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो उस प्रोडक्ट की यानी प्रोडक्ट को परचेज करने की डेट हो। सपोज आई एम गोइंग टू बाय एनी सिंगल पेन फ्रॉम एनी रजिस्टर्ड स्टोर, तो जिस डेट को बाय करेंगे वो डेट आ जाएगी। आफ्टर दैट उस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस, सपोज आप उस प्रोडक्ट को किस प्राइस पे बाय कर, किस प्राइस पे खरीद रहे हो, दैट मीन्स यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जो प्राइस पे कर रहे हो जा करके शॉप पे, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस फॉर पर्टिकुलर सिंगल प्रोडक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। आफ्टर दैट यू आर रजिस्टर्ड कस्टमर, कस्टमर आईडी क्या होती है, यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड। सपोज यू आर गोइंग somewhere, or I would like to take any authentic example, like I would like to take e-commerce platform, any e-commerce like Flipkart, Amazon or anyone। फ्लिपकार्ट का लो, वहां पे जाकर के रजिस्टर जैसे ही आप करते हो एक यूनिक आईडी आपकी क्रिएट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड कस्टमर आईडी, राइट। आफ्टर दैट जब आप ऑर्डर परचेज करते हो गाइस, तो एक ऑर्डर आईडी जनरेट होती है, ऑर्डर आईडी शुड बी ऑलवेज यूनिक। सपोज आप ऑर्डर आईडी, आप एक समय पे 10 प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, बट ऑर्डर आईडी एक होगी, बट उन 10 प्रोडक्ट की ऑर्डर आइटम आईडी होगी। प्लीज नोट डाउन इफ रिक्वायर्ड, यानी कि वन टाइम जो पेमेंट हो रही है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर आईडी, उसके अंडर में मल्टीपल प्रोडक्ट होंगे, तो these things moved under the order item ID। ठीक है, आई होप इज दैट क्लियर। तो सेकेंड टेबल की अगर हम बात कर लें गाइज, स्टोर सिटीज, यानी स्टोर, यहां पे स्टोर आईडी थी, यहां पे स्टोर सिटी, यानी स्टोर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। That means in this table available all the information about the store, right? Like store ID, store type, store की size क्या, what is the size of particular stores, city ID क्या है, किस city से belong करता है, what is the state code, what is the state, what is the city and all, right? Then I would like to move another, that means last one is that called product hierarchy, यानी कि जो प्रोडक्ट बाय हो रहा है उसकी थी प्रोडक्ट आईडी लेबल इंफॉर्मेशन, दिस वन इज आल्सो यूनिक फील्ड। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट टाइप, लेंथ, कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड ऑल, राइट। आई होप इज दैट clear to all of you about the data I am talking about. Now what you need to do guys, just you need to, I hope you have Power BI, right? If you don't have Power BI, just you need to visit on Google and search Power BI download for Windows। अगर किसी के पास मैक होगा तो मैक सपोर्ट नहीं करता है पावर बीआई को, तो आप उसको डाउनलोड करिए, राइट, और फ्री वाले को आप डाउनलोड करिए, ठीक है। नाउ आई वुड लाइक टू मूव Power BI. I have already installed Power BI desktop guys। मेरे पास Power BI desktop already है, just you need to understand the same।
So you guys need to understand the first, this one is called what? This one is called Power BI Desktop. इसको क्या बोलते हैं गाइस? इसको बोलते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप. जैसे ही ओपन करेंगे लुक लाइक दिस, राइट? तो जस्ट यू नीड टू कैंसिल दिस. आपको ऐसा एक विंडो ओपन हो करके आ गया और यहीं पे सारी कहानी आपको लिखनी है. यानी आप if you are trying to build any report on Power BI, just you need to do all these things over here. Right? I hope is that clear to all of you. There is any confusion, so please go ahead, ask me. I am ready to take. Right? So, suppose I have the Excel sheet. I would like to. Oh, my bad, my bad, my bad. I would like to see. Look. Sorry, guys. So see, this one, the file I am talking about, these files, there is a product ID, store ID, order day, selling price, customer ID, and order ID. These are all the details, right? Now I would like to move another file. There is store cities. यानी इस टेबल में क्या है? स्टोर की सिटी की इंफॉर्मेशन, राइट? स्टोर आईडी लेवल पे आपको इंफॉर्मेशन हो जाएगी किस टाइप का स्टोर है और स्टोर साइज क्या है, सिटी आईडी क्या है, स्टेट कोड क्या है, स्टेट क्या है, एंड सिटी क्या है. After that, I would like to move product hierarchy. Over here, you need to understand there is all the information available about the product, about the product. Is that means product ID against all the information available under this table, right? If you need to import, I would like to talk about this one is a Power BI desktop. Over here, you need to build your own report. राइट यहां पे आप अपनी रिपोर्ट्स को बिल्ड करने वाले, राइट? आई होप इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ. आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन टिल नाउ. यस, yes or no, guys? If you have any confusion till now, I am ready to take. If no, I would like to move for another one. Give me 1 second. So if you need to import any file or any data source, that time you need to go here. In आपका menu bar, this one is called menu bar. Over here you can see all the information. This one is a report view. I am talking about this field. This one is called table view. I will discuss this later and all. No worry. And there is all the details which you need to build. If you want to build any report, you need to use all these things, right? There is the filters. Also, if you import any tables, you will also see all the tables over here. I hope is that clear to all of you. Right, guys? Just I have 3 files. I would like to import. अभी हम एक्सेल से इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे. आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू इंपोर्ट वेब, दैट इज कॉल्ड वेब स्क्रैप. उसके थ्रू भी इंपोर्ट करने की कोशिश करें. सपोज आई हैव टेक्स्ट फाइल over here, order details version 1, you can see here. Just you need to click. See, there is the data point. Always, if you can see here, data type is look like this format. Just you need to visit on order details version 1. आपको यहाँ पे जाना है. आप कंट्रोल 1 प्रेस करिए, डेट पे जाइए एंड डेटा टाइप यानी डेट टाइप को चेंज कर दीजिए YY MM एंड DD फॉर्मेट एंड इसको ओके कर दीजिए. देन यू नीड टू सेव द सेम.
जैसे ही आप इसको क्लोज करते हैं, आफ्टर दैट अगेन इसको कैंसिल करके इफ यू वांट टू विजिट हियर, click here and upload the same, you can see the changes. Oh, नहीं हुआ, कोई बात, that is fine. There is an option based on first 200. You are trying to extract only 200 tables, rows, or you are trying to insert entire data set. But I would like to insert entire data set. But before, जब हम rows column की बात करें, if we talk about rows and column, you guys need to understand this one is called columns. This one is called columns. इसको क्या कहते हैं? Columns कहते हैं. And this one is called rows. इसको क्या बोलते हैं guys? Rows बोलते हैं. Right? इसको क्या बोलते हैं? Rows. And this one is called cells. This one is called cells. इसको क्या बोलते हैं? Cells. Right? I hope everyone understand this thing. I hope कि everything is clear till now. Please stay on the session. After the session, that means जब 15 मिनट रख जाएंगे, we will share your form link so that everyone need to fill the form and make sure form आपका correct fill होना चाहिए. Right? Name should be correctly mentioned over there. Right? So that कि आपको जो सर्टिफिकेट इशू हो वो करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत. Right? I would like to, there is a two option, load or transform. लोड का मतलब डायरेक्ट यहीं पे लोड हो जाएगा और यहीं पे सारी चीजें आप देख सकते हो. Transform data is that means you are trying to land in data warehouse. Because that means Power BI query editor section में आप चले जाओगे. I would like to click here. See, एक नया पेज ओपन हुआ. There is one new page which name is Power Query Editor. Right? Over here you can see all the information. There is a product ID. There is a store ID. I would like to, if you want to change any data type here, आप डेट फॉर्मेट में करना चाहें इसको डेट फॉर्मेट में ऑलरेडी है. आप कुछ और करना चाहें, सेलिंग प्राइस इज दैट इंटीजर फॉर्मेट. Do you understand, guys? Do you understand about the integer, float, string, or like something? Yes or no? Do you understand about that? I hope you understand about that. So after that, what you need to do? Selling price, customer ID, and order ID. Right? We have all the details. Again, if you want to change anything here, all changes will be reflected over here. जितने भी चेंजेस आप अप्लाई करोगे सारे चेंजेस यहाँ पे आपके दिखेंगे. I will tell you how we'll do that. No worry. I would also like to insert another file. Is that means CSV file. कहाँ पे? Store cities. Right? अब अगेन इसको आप इंपोर्ट. यहां पे देयर इज द प्रॉब्लम गाइस. देयर इज द प्रॉब्लम. यहां पे हेडर में तो सारे हेडर सही आए, बट अनदर फाइल विच वी एक्सट्रैक्टेड एंड यू कैन सी यहां पे रो नंबर 1 पे क्या आ गया है? हेडर आ गया, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है. राइट? कंप्लीटली जो कि रॉन्ग है. यहां पे हेडर नहीं आना चाहिए. तो व्हाट यू नीड टू डू? यू नीड टू use here, use first row as a header. When you select this, or don't need to select this, just you need to use first row as a header and click over here. You can see ये अपने आप अपडेट हो करके आ गया. Right? Now you can also see, if you guys understand, you also need to understand कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एक स्पेस दिख रहा हो.
दोनों कॉलम में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? एवरीवन सी दैट? तो जस्ट यू नीड टू क्लिक, select all the column, right click. After that you need to go on transform and go on trim. ट्रिम से जो एक्स्ट्रा स्पेसेस था वो रिमूव हो गया, यू कैन सी हियर, राइट? अब वही अगर इफ यू वांट टू डू ऑन अनदर सेक्शन, जस्ट यू नीड टू गो हियर एंड, सॉरी my bad, right click and transform and trim. Clear? But if you want to back, if you want to go back, just you need to click or cancel anything, right? तो आपको बैक पे चले जाओ. I have another table, guys. I would also like to add, that means product hierarchy table, right? I would like to insert the same. इसको भी हम कंप्लीट इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं. सी, बट देयर इज द प्रॉब्लम गाइस, यहां पे भी सेम सिचुएशन आई. तो आई वुड लाइक टू अप्लाई दिस, राइट? यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे होंगे, यू कैन सी यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर और फर्स्ट रो, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर, ये हो गया. या आप करना चाह रहे हैं यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, यानी हेडर को रो में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, या जो करना चाह रहे हैं, यू विल डू दैट, राइट? But there is the problem, guys. There is the problem. There is also extra space. यार यहाँ पे ट्रिम से तो काम नहीं करने चलने वाला है. Just you need to select this one, right click, go on transform and clean the data. And also there is extra space. That's why you need to select again, go transform and trim the data. तो जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थे या जो बिफोर स्पेसेस था, एवरीथिंग इज रिमूव, राइट? आई होप इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन टिल नाउ. इफ यस, अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज टेक्स्ट मी यस. अगर कंफ्यूजन नहीं है तो दैट इज फाइन, जस्ट यू नीड टू टेक्स्ट मी नो, right? Guys, another question. If you want to select multiple column, right? What you need to do? अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स को सेलेक्ट करना रहे तो आपको क्या करना चाहिए? What you need to do? Just you need to select all columns, और इसको अगर क्लीन करना है, see, my bad, राइट क्लिक आप करेंगे, सेम प्रोसीजर आप फॉलो कर लें. जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस जहां पे भी हो गए होगा, इट विल बी रिमूव. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Now if you need to save particular this file, now we have clean data, this one is called data warehouse, and we have clean data, and I need to save all the files. What we need to do? What we need to do? अगर आपको ये पता होगा कि what you need to do, definitely you will do. अगर आपको ये नहीं पता होगा क्या करना है, that is very difficult challenge for us, right? So then you need to click on here, close and apply section. जैसे ही आप close and apply section करेंगे, it will take few seconds, और यहां पे डेटा लोड होने लगा. यहां पे अगर आप देखोगे थोड़ी देर में आपको टेबल्स दिख जाएंगे. सी, there is three tables: order details, version 1, product hierarchy, and store cities. There is three tables in this, right?
So if you want to check all the data from particular these tables, just you need to click on table view. कहां पे क्लिक करना है गाइस? आपको क्लिक करना है टेबल व्यू के ऊपर, राइट? तो यहां पे देखोगे आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट आईडी, स्टोर आईडी, स्टोर डेट, सेलिंग प्राइस, customer ID and order ID. You will see all the information, right? समझ में आ रहा है सबको? Everyone understand the same? Are you enjoying the session? Yes or no? नहीं समझ में आ रहा है तो भी बता दो भाई, I will take it, right? सीधी बात है, हम बोर नहीं होने चाहिए गाइस। अगर हम बोर हो रहे हैं, डेटा साइंस इज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। डेटा आ रहा है, you need to do research. There is huge scope in data science, right? डेटा साइंस का ही एक पार्ट पावर बीआई, डेटा साइंस से ही शुरू होता है, यानी पावर बीआई इज दैट सिंगल पार्ट, राइट? आज के डेट में डेटा साइंस इज दैट फास्टेस्ट ग्रोइंग domain. There is huge vacancy. As per the recent LinkedIn report, there is every day we'll see around 2.5 lakhs vacancy in data science. But also there is huge shortage of data scientists. आज अगर साइंटिस्ट बन गए, is that means there is huge opportunity to work with. If there is anyone fresher or there is a multiple one who have experience in any specific domain, someone from banking, someone from insurance domain or anything, or someone doing any repeatedly task, आप repeated task daily कर, there is no new challenge, because that means आपके जॉब पे खतरा है, राइट? आज नहीं तो कल के डेट में वो ऑटोमेट होगा, एक डेटा साइंटिस्ट आकर के ऑटोमेट करेगा, यू विल लूज योर जॉब। आज के डेट में अगर कोई वेब डेवलपमेंट में जाना चाह रहा है, ऐसा नहीं कर रहा हूं, वेब डेवलपमेंट में वैकेंसी नहीं है, बट देयर इज अ शॉर्टेज, राइट? जॉब पाना इज दैट वेरी डिफिकल्ट, बट इस सेक्टर में जॉब पाना दैट इज वेरी, अगर डेटा साइंस की बात करें या पावर बीआई की बात करें, यू विल गेट हैंडसम पैकेज इन पावर बीआई। इन डेटा साइंस यू विल गेट 8 to 10 लाख का पैकेज आपको मिनिमम मिल सकता, मोर देन तो कोई लिमिट ही नहीं होती। स्काई इज द नो लिमिट गाइस, आपकी भी कोई लिमिट नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो, जो सोचा वो कर लोगे। सोच ऑलवेज आपकी बुलंदियों पे होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, राइट? बट एक बात जरूर याद रखना कि अगर कुछ भी करना है, यू नीड टू डू एनीथिंग इन फ्यूचर, जस्ट एक्ट नाउ। अगर आप लेट करोगे, देयर इज मल्टीपल थिंग्स गाइस, अगर आप लेट सोचते हो तो लेट इंप्लीमेंट होता है, यू विल वेस्ट योर टाइम, दैट इज वेरी मच। अगर आप जल्दी सोचते हो तो एक्ट जल्दी अगर करते हो, इज दैट मीन्स यू रेस्पेक्ट योर टाइम, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग विच यू वांट। तब भी मिलेगा, लेट मिलेगा, और कहीं इतना लेट हो जाए कि प्रभु भी कहे बेटा अब तो रिटायरमेंट का समय हो गया, अब क्या करेगा, चला जा, राइट? तो दैट इज द थिंग, डजंट मैटर। पावर बीआई इज दैट वेरी इजी पार्ट गाइस, एकदम डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की करने की जरूरत है। पावर बीआई समझ में आ गया? if someone here to learn MySQL, Python, or you have idea about Python, you have idea about MySQL, you are trying to learn Power BI, that is very easy. Or you are trying to build your career in data science, there is very good opportunity for your future.
नौकरी आपका वेट कर रही है मार्केट में, डिपेंड करता है आप कितना तैयार है उसके लिए। इफ यू आर रेडी यू विल गेट, इफ यू आर नॉट रेडी, प्रभु भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन अस गाइस, बट वी आर ट्राइंग। जिस सेक्टर में जो भी करना चाह रहे हो, जी जान लगा के करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पावर बीआई करना है, आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है। आपको किसी भी सेक्टर में जाना है, एनीथिंग यू वांट, जस्ट यू नीड टू एक्ट नाउ। कल के डेट में घर वाले भी कहेंगे कि बेटा तूने कुछ नहीं किया, राइट? तो जो करना है अभी करना है, शुरू आज से कर दो, राइट? रिजल्ट ऊपर वाले हैं, दे देंगे। बट ऐसा नहीं है कि हमने तो काम किया ऊपर वाले ने दिया नहीं, नहीं, रिजल्ट ओरिएंटेड टास्क होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यू नीड टू इंश्योर कि हाँ, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, यू नीड टू इंश्योर कि हम इतने दिन में क्लियर करें। 100% you need to ensure. If you are trying to build your career in any specific domain, you need to ensure, you need to prepare. There is some people जो अंडर ग्रेजुएट है या ग्रेजुएशन कर चुके हैं और मास्टर्स में है या मास्टर कर रहे हैं, दे नीड टू एक्ट नाउ। जिस भी सेक्टर में जाना है, जो भी करना है, कर डाल, सोचना नहीं। क्योंकि लाइफ में अगर सोचते हैं तो सोचते ही रह जाएंगे, वो दिन कभी नहीं आना है। जो करना है आज करना है, अभी से शुरू करना है। यू नीड टू क्लियर योर गोल, यू नीड टू डिसाइड व्हाट यू नीड टू डू एंड डू इट राइट। दैट इज द थिंग। नहीं तो या तो हमारे जैसे बनना है कि नहीं अभी तो हमें कुछ पता नहीं है, बाद में सीखेंगे, बाद में करेंगे, तो भगवान मालिक है। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कर लेंगे यार, सभी लोग कर लेंगे, राइट? सो नाउ यू वी नीड टू एम आउट पॉइंट, क्योंकि थोड़ा सा जरूरी भी हो जाता है। लाइफ इज नो रिस्की गाइस। लाइफ में एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है। अगर आप ये सोचो लाइफ इज रिस्की, लाइफ हमारे साथ मजाक कर रही है, मजाक हमारे साथ कुछ कोई नहीं करता है गाइस, हम खुद के साथ मजाक करते हैं, राइट? हमारे साथ कोई मजाक करने वाला नहीं। हम अपने साथ क्या मजाक कर रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट। हम शुरू में वही नहीं करते तो आज की डेट में ये नहीं करना पड़ता। इफ हो सकता है कि पहले लोगों को पता ना हो, या आपको प्रॉपर मेंटरशिप ना मिली, या हमें नहीं मिली, बट जब मिले तब से शुरू हो जाओ भाई। व्हाई वी नीड टू ब्लेम एनी अदर वन? जस्ट वी नीड टू ब्लेम आवरसेल्फ। हमने नहीं किया, इसमें किसी की गलती नहीं है। इफ वी आर डूइंग टू डू समथिंग तो करो, नहीं करना है तो ब्लेम करके किसी क्या होना। आप मम्मी पापा को दो या आपके किसी नोन को दो, दैट इज रॉन्ग वे। ब्लेम करना है, खुद को ब्लेम करो, हम गलत। महापुरुष कह के गए हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न लिया को है। जब मैंने अपने आप को देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं था। तो जस्ट यू नीड टू डू लुक लाइक समथिंग, ये मान के चलो हमसे बुरा कोई नहीं है। जस्ट यू नीड टू रेक्टिफाई द सेम, यू नीड टू फिक्स द सेम, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। Okay, so if you want proper guidance, I am always there guys. If you want to build your career in any sector, I am here. If you want my mentorship, I am here, right? If you want my support, I am here. But that is doesn't matter me only. आप किसी एक को डिसाइड करो कि आपका मेंटर कौन बन सकता है। आप जिसके ऊपर भरोसा कर सकते हो, 100% भरोसा कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू रेक्टिफाई वन पर्सन। वो आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई गार्जियन हो सकता है, और एनी वन। जस्ट यू नीड टू रेक्टिफाई वन पर्सन ओनली, नॉट मोर देन वन, जिसके ऊपर आंख मूंद के भरोसा कर सकते हो, आंख मूंद के सारी चीजें बता सकते हो, आंख मूंद के सजेशन ले सकते
जो आपके बारे में बेटर आपको गाइड कर सकता। ऐसा ना हो कि किसी और से गाइड ले लो, वो ऐसे लोग से लो कि वो आपको गाइडेंस ही ऐसी कर दे कि आपका फ्यूचर रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाए। नहीं, इफ यू आर डूइंग टू डू समथिंग, यू नीड टू फाइंड आउट सम प्रॉपर मेंटर जो आपको गाइड कर सके। वो कोई भी हो सकता है, नोन हो सकता है, आपके कोई टीचर्स हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, या कोई भी हो सकता है। दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू, बट नीड टू फाइंड आउट। और आई रिक्वेस्ट, अगर यहाँ पे रियली यू वांट टू लर्न समथिंग, you want to grow something in any sector, you need to find out particular this person। कोशिश करना कि as soon as possible फाइंड। ये नहीं कि हम 4 महीने बाद हम ढूंढेंगे तब, ऐसा नहीं। फाइंड आउट as soon as possible एंड अपनी बात पे, अपनी डायरेक्शन में मूव होना चाहिए। अगर किसी को डेटा साइंस पे जाना है, डेटा साइंस पे जाओ, कहीं से भी जाओ, डजेंट मैटर। स्किल्ड अप से आना है, मोस्ट वेलकम। कहीं से जाना है, प्लीज गो अहेड, डू इट। डेटा साइंस इज द बेस्ट फील्ड। आप इससे बेटर फील्ड आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, इससे बेटर फील्ड इज दैट, इज दैट वेरी गुड। आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, बट दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हैं। राइट, इफ यू आर डूइंग समथिंग, इफ यू आर एक्सप्लोरिंग समथिंग, गो अहेड। ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ जाओ जिससे आप, जिस पे आप बिलीव कर रहे हो, किसी भी पर्सन के साथ जाओ जिस पे आप बिलीव कर रहे हो, एंड ट्राई टू डू समथिंग फॉर योर फ्यूचर, नॉट फॉर एनी अदर वन, नॉट फॉर योर मदर, नॉट फॉर योर फादर, नॉट फॉर योर फैमिली, जस्ट फॉर यू, योर सेल्फ। आप अपनी पहचान बनाने की कोशिश करो। जस्ट वी नीड टू बिल्ड आवर थिंग्स कि हम क्या बनना चाहते हैं, हम बन क्या सकते हैं। कोई वीक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो जो करना चाहेगा वो कर सकता है। यू विल डू ईच एंड एवरीथिंग, बट टोटली डिपेंड ऑन यू कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। बाकी आपका छोटा भाई यहाँ बैठा ही है। जब आपको छोटे भाई से मिलना हो तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर ऑल ऑफ यू। आई डोंट, आई हैव एनफ टाइम। I will discuss each and every part. If you want, most welcome to all of you. So now I would like to came another same topic. So there is order detail, guys. यहाँ पे देखोगे, you we have product ID, store ID, store order date, selling price, customer ID, and order ID. And second one is table is product ID, product name, type, length, category, and subcategory. Right? And third table, guys, there is store information. Right? If you want to do anything for your future, if you want to learn Power BI, तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। बस आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। जो टेबल व्यू है, टेबल व्यू में डेटा क्या है, how you will relate particular this data to with the multiple table. For that, you need to find out some relation, right? जब आपको वो रिलेशन मिल जाएगा और सारे टेबल को, यानी होता है ना कड़ी से कड़ी को जोड़ना, राइट, एक कहावत है, वो बता रहा हूं। तो यू नीड टू फाइंड आउट पर्टिकुलर सच कड़ी। जब आप वो फाइंड आउट करके उसको जोड़ दोगे और उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल लोगे, दैट इज कॉल्ड योर रिपोर्ट। तो हियर यू डोंट नीड टू मेक कड़ी टू कड़ी, यहां पे वो कड़ी ऑटोमेटिक जुड़ जाती। सी हाउ दिस वन इज कॉल्ड मॉडल व्यू, जहां पे वो कड़ी जुड़ती है, राइट। यू नीड टू सी गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अ थ्री टेबल
बट यहां पे जो कड़ी जुड़ी है, यू गाइस नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड, एक टेबल में कुछ भी नहीं जुड़ा है। कुछ तो हुआ है इस टेबल में, कुछ नहीं आ रहा है। क्या यहाँ पे हेडर हमने सही पिक नहीं किया है? क्या यहाँ पे हेडर फर्स्ट लाइन आइटम है? You need to think, guys. So for that, if we need to think this, we need to land again on Power BI query editor. Just you need to click data transformation, click over there and check the same. Store cities. There is the problem. No? Oh my God. Yes, there is the problem. यहां पे अगर देख रहे हैं तो हमारा फर्स्ट कॉलम ही गायब है। राम राम सत्य हो गया इसको। आई वुड लाइक टू डिलीट दिस। कुछ तो हुआ होगा। आई वुड लाइक टू डिलीट दिस एंड आई वुड लाइक टू ऐड सेम फाइल। अब देखते हैं आता है कि नहीं। आना चाहिए एडली based on entire data set. Yes, there is the column, guys. There is something that happened जो कॉलम हमारा स्वाहा हो गया। तो you need to add first row as a column. Look like this. अब आप इसमें देख लो कहीं पे स्पेस दिख रहा है। यस, देयर इज द स्पेस। यू नीड टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस। यू नीड टू रिमूव, जस्ट यू नीड टू राइट क्लिक, गो ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा, ट्रिम। अगर आपको क्लीन भी करना है तो क्लीन भी कर लो। दैट इज कंप्लीटली अप टू यू गाइस। राइट नाउ यू नीड टू सेव अगेन। और अब कड़ी से कड़ी जो हम जोड़ने की कोशिश कर रहे थे बन गई। इन लाइंस का क्या मतलब है? वी नीड टू अंडरस्टैंड द सी। ये जो लाइन एक दूसरे से जुड़ी है, इनका क्या मतलब? अगर हम फर्स्ट वाले थिंग्स पे क्लिक कर दें, यू कैन सी कि प्रोडक्ट आईडी यानी दिस प्रोडक्ट आईडी इंडिकेट दिस प्रोडक्ट आईडी। जैसे ही इस पे हम क्लिक कर रहे हैं, राइट, यानी कि ऑर्डर डिटेल्स वर्जन 1 और प्रोडक्ट आईडी, दैट मींस प्रोडक्ट हायरार्की में जो can you please share someone certificate? Is that means the review link over there, certificate form available? Okay. So यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस? यहाँ पे हो रहा है कि प्रोडक्ट आईडी दोनों टेबल में कॉमन है। तो यानी कि जो मॉडल व्यू बन रहा है, प्रोडक्ट आईडी टू प्रोडक्ट आईडी बन गया। दूसरे टेबल में बनेगा स्टोर आईडी टू स्टोर आईडी, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? दोनों में कॉमन फैक्टर इज दैट स्टोर आईडी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दोनों में कॉमन फैक्टर इज दैट स्टोर आईडी। तो यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड, जब ये स्टोर आईडी बनती है, अगर इसको डबल क्लिक कर दो तो यहां पे देखोगे ऑर्डर डिटेल्स वर्जन 1 एंड प्रोडक्ट हायरार्की का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, यहां पे लिखा है कि मेनी टू वन। व्हाट इज मेनी टू वन? मेनी टू वन का मतलब गाइस ये हो जाता है कि फर्स्ट टेबल में एक प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट देयर इज मल्टीपल ऑर्डर्स जनरेटेड, राइट? इफ वी हैव मल्टीपल ऑर्डर्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड उस मल्टीपल ऑर्डर्स का मतलब क्या है। डू यू अंडरस्टैंड गाइस? तो मल्टीपल ऑर्डर्स इज दैट मींस एक प्रोडक्ट आईडी में, इज दैट मींस ऑर्डर डिटेल्स वर्जन 1 में एक ही प्रोडक्ट आईडी मल्टीपल टाइम प्लेस हो। बट इन द प्रोडक्ट हायरार्की टेबल गाइस, देयर इज यूनिक लाइन आइटम। देयर इज यूनिक लाइन आइटम। यहां पे केवल और केवल यूनिक डेटा पॉइंट होगा। देयर इज नो डुप्लीकेट वैल्यू, there is no duplicate product ID, but in this field there is a multiple duplicate product.
That's why we select here many to one. By default, system will by default select this. One to one is that means unique to unique. अगर दोनों में unique field होती, unique product ID होती, that time you need to select one to one. One to many is that means फर्स्ट में यूनिक है, सेकंड में मेनी. मेनी टू मेनी मतलब दोनों में मल्टीपल है, दैट टाइम यू नीड टू सेलेक्ट दिस. यही सेम सिनेरियो यहां पे बन रहा है. आई होप इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आई होप इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, एनीवन, आई एम रेडी टू रिप्लाई. प्लीज गो अहेड गाइस. Now, okay, okay, Sumitha जी, of course. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, अगर आप इस पे रिलेशन चेक कर रहे हो तो डबल क्लिक कर लो. डबल क्लिक किया तो ऑर्डर डिटेल्स वर्जन 1 पहले आ गया, ये दोबारा आ गया. आई एम ट्राइंग टू टेल यू इन अंडर दिस सेक्शन प्रोडक्ट हायरार्की में जो रोज ये बने हुए हैं ये यूनिक रोज है. ये रो कहीं और नहीं होंगे सेम प्रोडक्ट आईडी, यानी प्रोडक्ट आईडी इस कॉलम इस टेबल में यूनिक. बट क्योंकि अगर 4-1 की बात करें हम, राइट, 4-1 में यही प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट जो प्रोडक्ट होगा, सपोज एक बिस्किट है, एक बिस्किट तो मल्टीपल टाइम सेल हो सकता है ना, मल्टीपल डेट में, दैट मीन्स ए मेनी हो गया. बट ये यहां पे जो बिस्किट वाली है ये तो एक ही रहेगी, ये मेनी नहीं हो सकती. दैट्स व्हाई वी सेलेक्ट मेनी टू वन, यानी मल्टीपल रोज एंड सिंगल रो से ई हो रहा है. आई होप इज दैट क्लियर सुस्मिता. एंड इफ यू click here, make this relationship active. Always ये active होनी चाहिए. If you want to disable the same, if you want to inactive the same, definitely you will also do the same. We'll also discuss about this later, no worry about that. But right now, this one is too early to discuss all these things, right? Is that clear to all of you? So I would like to move another one. तो अभी हम रिपोर्ट को बनाने की कोशिश करते हैं. विल ट्राई टू बिल्ड वन रिपोर्ट गाइस फॉर यू. तो इफ यू वांट टू मेक एनी नेम, सपोज दिस वन इज कॉल्ड समरी रिपोर्ट और समरी व्यू, तो आप लिख सकते हो SUMMERY समरी व्यू. आपको अपना नाम लिखना है तो वो भी ले सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू. मेरे पापा का कुछ नहीं जाने वाला है वहां पे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है. दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन बिजनेस एथिक्स, दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू. यू नीड टू डू ऑन बेसिस ऑफ दैट, राइट? इज दैट क्लियर? देयर इज एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? यस और नो? रिप्लाई कर दो भाई थोड़ा आप लोग. ओके, सो आई वुड लाइक टू, सबसे पहले कोई रिपोर्ट बनती है तो उसका नेम जाता है, टाइटल जाती है. दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू क्लिक हियर टेक्स्ट बॉक्स पे. यहां पे हम लिखना चाहेंगे पावर बीआई वर्कशॉप, राइट? आई वुड लाइक टू इंक्रीज दिस साइज अप टू 54 or till 40, राइट? और इसको आप ऐसे कुछ सजाना चाहें तो कर सकते हैं. डिपेंड करता है आप इसकी टाइप क्या लेना चाह रहे हैं. जो लेना चाहें वो ले सकते हैं, जिस टाइप का लेना चाहें उस टाइप का ले सकते हैं. दैट इज कंप्लीटली अप टू यू. कुछ भी लेना, थोड़ा सा प्रोफेशनल ले लेना कलर और साइज, राइट? अगर आप इसको सेंटर में रखना चाहते हैं सेंटर में रख लीजिए. इफ यू वांट मूव दिस अनदर वे, तो आप इसको वहां पे भी रख सकते हैं. सपोज
कि अगर हम इसको चाहें कि नहीं, आई नीड टू मेक दिस ओवर हियर, आई विल ऑल्सो डू द सेम। सही है गाइस? इज दैट परफेक्ट? Now I need to insert one card over is this one is available over here. अब इस कार्ड को अगर हम बनाना चाहें, थोड़ा सा सुंदर और सुशील बनाना चाहें, तो सुंदर और सुशील यहां बनेगा। What we need to add? We need to add order ID. Order ID should be always count and वो भी distinct होनी चाहिए। अब यहाँ पे देख रहे होंगे count of order ID लिखा हुआ आ रहा है, which is completely wrong. Count of email, sorry, give me 1 second, guys. I hope everyone hear me on YouTube. Okay, that's good. तो अगर आपको ये चेंज करना है, काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी, जस्ट यू नीड टू विजिट हियर, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्स। आप कर सकते हैं। अब आप यहां पे कुछ और चेंज करना चाह रहे हैं, इसके शेप को चेंज करना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कराना चाह रहे हैं, यानी इसका मेकअप थोड़ा सा करना चाह रहे हैं, राइट, इन द यू अनदर सेंस। तो जस्ट यू नीड टू विजिट हियर गाइस। आपको क्या करना है, साइज आपका क्लियर है, आप कलर ब्लैक ही लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ब्लैक मैं हूं तो इसलिए ब्लैक कलर भी मैंने ले लिया, राइट। आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू मूव, ऑटो पे हमें नहीं जाना है, आप कैटेगरी पे मूव कर सकते हैं। कैटेगरी पे क्या मिलता है, लेट मी चेक। अगर इसका कलर दे दे तो ऑर्डर्स का हम कलर चेंज करने की कोशिश करें। जो हमें नहीं करना है, हम इसकी साइज को थोड़ा जरूर बढ़ा दे, 16 कर दे, तो दैट इज गुड वे, राइट। तो यहां पे जो चेंजेस हो सकते थे, आई थिंक वो चेंजेस हो गए हैं। जस्ट यू नीड टू गो हियर। जनरल पे अगर चले जाएं हम, जनरल पे क्या हो सकते हैं, देयर इज मल्टीपल थिंग। आप प्रॉपर्टी में भी चेंजेस कर सकते हैं, हाइट और विड्थ को भी घटा सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू, मेरा कुछ नहीं है। तो टाइटल भी इसमें ऐड कर सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। यहाँ पे ऑर्डर्स कुछ रखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, ये ऊपर भी आ जाएगा। तो हमें टाइटल नहीं ऐड करना, आई डोंट नीड टू ऐड टाइटल, आई वुड लाइक टू डिसेबल द सेम। बट अगर आप इसके अलावा कुछ ऐड करना चाहें, इफेक्ट्स, इफेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड बैकग्राउंड्स। बैकग्राउंड आप कुछ और करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट आई लव व्हाइट बैकग्राउंड, तो आई वुड लाइक टू रिफर व्हाइट। अब आ जाता है विजुअल बॉर्डर। आप बॉर्डर कैसा चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बॉर्डर का कलर कोई और हो जाए। आई वुड लाइक टू टेक दिस वन। जब आप इसको इंक्रीज करते हैं 20 पिक्सल या कुछ भी, तो सी द शेप गाइस, एक सुंदर सा शेप बन करके आपके पास प्रेजेंट। तो यू विल मॉडिफाई द सेम एज पर यू। इट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू कि आप किस टाइप का शेप और कैसा शेप चाहते हैं, राइट। दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। इफ यू अंडरस्टैंड कि हाँ हमें ऐसा कुछ शेप से, यू विल डेफिनेटली डू द सेम, राइट। अब इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहे, बड़ा करना चाहे, कर सकते हैं। ये हो गया ऑर्डर्स। अब जब ऑर्डर्स की बात हो रही है, हमें स्पेसिफिक ड्यूरेशन की ऑर्डर्स चाहिए, तो व्हाट वी नीड टू डू, दैट टाइम यू नीड टू मेक अ फिल्टर। अगर आपको फिल्टर कौन सा मानना है, ऑर्डर डेट पे आपको एक फिल्टर मानना है। यहां पे आना क्या चाहिए, डेट आना चाहिए, राइट। आई वुड लाइक टू थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड सही करते हैं और सारी चीजें चेंज करते हैं। लेट मी ट्राई। तो अगेन हम जनरल पे जाने की कोशिश करेंगे। इफेक्ट्स पे अगर क्लिक करें, अगर हमें बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक कर देना,
राइट। और इसका कुछ और हम करना चाहें, बॉर्डर वैसे ही रखना हो तो रख सकते हो, विजुअल बॉर्डर करना हो तो कर सकते हो, दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। आप चाहते हो नहीं बॉर्डर हम कुछ और रखें या नहीं रखें, दैट इज डिपेंड ऑन यू। शैडो आपको चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो मत लो। गो डाउन, और कुछ चाहिए, बैकग्राउंड बॉर्डर आइकन, ये सारी कलर है। बैकग्राउंड आपको चाहिए क्या, वाइट। इसका इसका भी वाइट अगर चाहिए तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। आइकन तो आपको छेड़ना ही नहीं है, आइकन को छेड़ दोगे तो वो अलग ही परेशान करेगा। थोड़ा सा प्रॉपर्टीज में आते हैं, प्रॉपर्टीज में आपके लिए कुछ नहीं है, पोजीशन भी कुछ नहीं है, आपके लिए पैडिंग में भी कुछ नहीं है, बट होगा कहाँ पे, विजुअलाइजेशन। अगर आप वैल्यूज पे आ जाओ और इसका कलर व्हाइट कर दो और इसकी साइज को उठा करके आप 16 कर दो और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दो भैया तुम ऐसे ही काम कर लियो। अब इसको हम कर दे अगर हाइट, व्हाट यू सजेस्ट गाइस, this one is look like good or look like bad? I hope you understand what I am trying to do the same. I would like to increase the size. हाँ, आप इसको छोटा करना चाहिए कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसको बना दिया। अब अगर हमें इसकी डेट को उठा करके करना है कि नहीं भाई, हमें जो चाहिए ईयर वो केवल और केवल चाहिए 24, वो भी जैन मंथ चाहिए, ठीक है। तो हमने जैन मंथ के ऑर्डर्स आपके सामने दिखा दिए, राइट। नाउ आई वुड लाइक टू कॉपी दिस एंड पेस्ट द सेम, क्योंकि ना हमारे पास इतना टाइम है ना ही आपके पास टाइम है कि आप बार बार इसकी डिजाइनिंग कर सको, और डिजाइन पे इम्पैक्ट भी नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू टेक सेलिंग प्राइस, cloning the same and take selling price, and this one is called gross margin value or GMV, राइट। डेसिमल लगाना होगा, लगा सकते हैं आपके ऊपर। अगर हमें इसी को अगर आगे थोड़ा सा ले जाना है, कॉपी एंड पेस्ट एंड अगेन पेस्ट हियर, और उसको हम क्या कह दे कि हम यहाँ पे जो लेंगे उसका नाम हम रखेंगे कस्टमर्स, दैट इज कॉल्ड कस्टमर्स, राइट। ये क्या आ गया, इसको तो हमें करना है काउंट में। नाउ इज दैट परफेक्ट। और कुछ आपको लगता है लेना चाहिए तो ले सकते हो, नहीं लगता है तो डोंट नीड टू टेक। नाउ आई वुड लाइक टू टेक वन टेबल फॉर योर बेटर अंडरस्टैंड। अगर हम एक टेबल ले लें यहाँ पे और इसको कुछ लुक लाइक ऐसा व्यू दे, I need to add here what? I need to add here category and click here. चेक बॉक्स पे आप क्लिक करोगे प्रेजेंट हो जाएगा। I need to add here order ID. Order ID should be always count हमें करना है। उसके बाद हमें सेलिंग प्राइस लेना है, सेलिंग प्राइस दैट मीन्स सम। उसके बाद हम कस्टमर काउंट्स भी लेना चाहते हैं, right? This also need to make the change, that means count, और इसका count भी कर सकते हो आप। If you also need to take product ID, you will also add the same
but you need to do as a count. अब इसका नाम थोड़ा सा अगर हमें रीनेम करना हो, कैटेगरी कर लो, सॉरी, second one is orders, third one is ZMB, fourth one is customers, fifth one is live products. अब इसके साइज को थोड़ा सा हम अगर इंक्रीज करना चाहें टिल 12 तो हम कर सकते हैं। दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन अस। बैकग्राउंड हम व्हाइट ही रखना चाहें तो व्हाइट रख सकते हैं। दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन अस कि आप क्या करना चाह रहे हो। कॉलम हेडर का कोई कलर आप देना चाहो, यू विल ऑल्सो डू द सेम। सपोज हमें ये व्हाइट चाहिए और इसका कलर ब्लैक चाहिए, और इसको सेंटर में लाना चाहो, लेफ्ट में लाना चाहो, तो यू विल ऑल्सो डू द सेम। इसको बोल्ड करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। देयर इज अ मल्टीपल थिंग्स। अगर हम टोटल की बात करें, टोटल इज ऑलरेडी 10 और इसको भी हम व्हाइट कर दें एंड बैकग्राउंड इज शुड बी ब्लैक, यू विल ऑल्सो डू द सेम। और आप स्पेसिफिक कॉलम लेबल कुछ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि आपको क्या करना है, जीएमबी, जीएमबी पे आप कुछ करना चाह रहे हो, अप्लाई करना चाह रहे हो कुछ, तो वो कर सकते हो। दैट इज रॉन्ग, अभी यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। आप कैटेगरी लेवल पे ही रखे दो जो करना है। अब टेक्स्ट कॉलम पे हम चलते हैं। वैल्यूज टेक्स्ट बैकग्राउंड दोनों ब्लैक। अगर हम बैकग्राउंड कलर को मेंशन करें ब्लैक तो क्या होगा? अगर इसका हम कर दें व्हाइट तो क्या होगा? इज दैट मीन्स जो आपने यहां पे सेलेक्ट किया वो इम्पैक्ट कहां कर रहा है गाइस? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो इम्पैक्ट सीधा करेगा आपके डेटा पॉइंट, राइट? डिस्प्ले यूनिट आप कैसा दिखाना चाहते हैं, 1000 में दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप दिखा सकते हैं। दैट इज कंप्लीटली अप टू यू, राइट? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देयर इज अ मल्टीपल थिंग्स विच यू एक्सप्लेन द एक्सप्लोर द सेम बेसिकली। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े, आई ऑल्सो नीड टू एड समथिंग ओवर हियर, look like I would like to add title। ये क्या? कैटेगरी लेबल व्यू। अगर हम ये ऐड करना चाहें और इसकी साइज 20 रख दें तो विल ऑल्सो डू द सेम। दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन अस कि हम क्या चाह रहे हैं। सब टाइटल भी ऐड करना चाहो, यानी कोई नोट्स लिखना चाहो, दिस टेबल ऐसा कुछ कर सकते हो, दिस टेबल प्रेजेंट्स द डेटा लुक लाइक समथिंग। तो आपकी कॉल है, आप लिखना चाहते हो नहीं लिखना चाहते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। डिवाइडर आपको चाहिए तो लीजिए, नहीं चाहिए डिवाइडर इज दैट मीन्स यहां पे देख रहे होंगे एक डिवाइडर आ गया, तो इफ यू डोंट नीड टू ऐड डिवाइडर यू नीड टू रिमूव दिस, राइट? गो डाउन, इफेक्ट्स आप देख सकते हो। बैकग्राउंड में कोई कलर आपको चेंज करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो मत करो, राइट? यानी हमारा कुछ नहीं जाने वाला। दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू विच यू वांट, व्हाट यू वांट, राइट? तो देयर इज अ मल्टीपल थिंग्स which you will apply. I'd also like to add here one thing for your better view। यहाँ पे अगर हम लुक लाइक सिमिलर कोई व्यू देना चाहे तो
क्या हम दे सकते हैं? यस, हमें चेक करना है, वी नीड टू चेक ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं और कौन सी कैटेगरी से आ रहा है। दैट इज कॉल्ड कैटेगरी, EGORY, and this one is called orders, right? You will also do the same. आप इसकी साइज बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू, व्हाट यू वांट। ठीक है, इसको इंक्रीज कर सकते हो, इसको रिड्यूस कर सकते हो, व्हाट यू वांट यू नीड टू डू। इसको कुछ मॉडिफाई करना है, यू विल ऑल्सो डू। इससे क्या पता चल रहा है कि अगर करंट मंथ में हमारा नंबर, यानी कितने ऑर्डर्स अभी तक जनरेट हुए, 614, 614, कितना GMV आया, 2 मिलियन, कस्टमर्स कितने आया, 614। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें आ रही। ओके, नाउ कैटेगरी लेवल व्यू की बात करें तो इफ वी नीड टू ब्रेक ओवरऑल डेटा ऑन द कैटेगरी लेवल, विल सी द सेम कि कैटेगरी लेवल क्या है। बेबी केयर में कितने ऑर्डर्स आए, बेकरी में कितना आया, ब्यूटी में कितना आया, बेवरेज में कितना आया, क्लीनिंग में कितना आया, फूड ग्रेन्स में कितना आया। यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। I hope everyone happy. I hope everyone understand the same. I hope everyone clear. I hope there is no issue and no doubt till now. Right? If you have any feedback, anything, please go ahead. आप दे सकते हो। पावर BI लर्न करना हो, आप 10 दिन में लर्न कर सकते हो। दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर कैलिबर, योर क्वालिटी, और आप कितना टाइम दे रहे हैं। But yes, if you want to get job in data analytics domain, minimum requirement you need to understand, you need to complete understand end to end MySQL, Python, and Power BI. वो three are major component which you need to understand. अगर आप पैकेज हाई पे जाना चाह रहे हो, that means you also need to understand machine learning, that means full stack data science पे। ठीक है, उसके बाद आप एनालिटिक्स करना चाहो, यू विल आल्सो डू दैट, इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू कि आपको पैसे कितना, आपकी भूख कितनी, राइट? भूख ज्यादा होगी, काम ज्यादा करोगे, काम ज्यादा करोगे, पैसे ज्यादा आएंगे, पैसे ज्यादा आएंगे तो आराम ज्यादा करोगे, आराम मतलब सुकून ज्यादा रहेगा। तो दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन। सो दिस इज द व्यू which I will try to create, I will try to present to all of you. I, if I also need to add चार्ट भी ऐड करना चाहें तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड द सेम। सी, अगर एक चार्ट ऐसा कुछ बनाना है, हमें कस्टमर लेवल व्यू देखना है और यहीं पे हम ऐड कर दें ऑर्डर डेट, और यहां से डेज को हम कर दें गायब, राइट? और यहां पे देखोगे लुक लाइक सिमिलर व्यू बन जाएगा, और यहां से अगर आप मंथ को भी गायब कर दो तो लुक लाइक क्वार्टरली व्यू एक प्रेजेंट होकर के आ गया आपके सामने। दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको अगर हमें नीचे ले जाना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। और इसी को हम कॉपी करके अगर पेस्ट कर लें इधर भी, अगर हमें ये चलना है, आई नीड टू अंडरस्टैंड, आई नीड टू चेंज पर्टिकुलर दिस चार्ट ऑन दिस, और यहाँ पे हम चेक करना चाहे क्वार्टर आईडी क्वार्टर टू, बट यहाँ पे हम क्या चेक करना चाहते हैं, हम यहाँ पे कैटेगरी ऐड। तो कैटेगरी लेबल क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, यू विल सी दैट, राइट? कैटेगरी लेबल जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, विल टेक इट, विल सी दैट, विल अंडरस्टैंड द सेम, वी डू द अंडरस्टैंड। I hope everyone okay with that. I hope everyone aligned with that.
Guys, again, this one is look like overview or understanding about the Power BI. Is that means if you want to build any report, there is the thing which you need to explore. अगर आपको लग रहा है कि नहीं, I need to extract data from the web scraping, just I would like to prefer one uh, world population. तो आप इस टेबल को प्रिफर कर सकते हो, यहां पे अगर चले जाओ, इस टेबल के डेटा को अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तो यू विल ऑल्सो एक्सट्रैक्ट दिस टेबल्स, दिस रिपोर्ट्स। जस्ट आपको इसका यूआरएल कॉपी करना है एंड गो हियर। कहाँ जाना है आपको? गेट डेटा पे जाना है, वेब पे जाना है गाइस, और यहां पे यूआरएल पेस्ट करना है और ओके कर देना। इट विल टेक फ्यू सेकंड्स, प्लीज वेट। तो यहाँ पे आपको टेबल्स मिल जाएंगे, अगर इस पे सेलेक्ट करोगे तो सी 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 सारे टेबल्स आपको यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। आप सारे टेबल को सेलेक्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। राइट, इसमें देखिए कुछ है, कर सकते हैं। राइट, आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाओगे, आपको सारे टेबल्स नीचे दिख जाएंगे। सी, यू विल सी ऑल द टेबल्स। यानी अब इस पे भी आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। दैट मीन्स जो वहां पे वर्ल्ड पॉपुलेशंस की रिपोर्ट थी, आपने उसको ही एक्सट्रैक्ट कर लिया। दिस वन इज वेरी बिग थिंग गाइस। यानी वेबसाइट से भी अगर किसी डेटा को इंपोर्ट करना है, तो यू विल ऑल्सो डू द सेम। राइट, और इसका नाम भी अगर कुछ रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। राइट, डेटा, सपोज आई वुड लाइक टू राइट डाउन डेटा नेम, आप चेंज कर सकते हो। डबल क्लिक करोगे, आप चेंज कर सकते हो। दैट इज कंप्लीटली अप टू यू, what you want, which types of reports you need to prepare, and you need to save and go on where पावर बीआई डेस्कटॉप से आप मूव करोगे पावर बीआई सर्विसेज से, वहां से रिपोर्ट को अपने शेड्यूल कर। Right? This is the complete process about the Power BI. I again ask my team to share Google page review, form link, is that means review form link, जहां पे आप अपना फुल नेम मेंशन कर देना, so that कि हम आपका सर्टिफिकेट इशू कर पाए। सर्टिफिकेट विल बी इशू बाय डे आफ्टर टुमारो। राइट, आपको डिजिटली ओवर द मेल, ओवर द व्हाट्सएप, आपको फॉर्म का लिंक अभी जस्ट डिलीवर हुआ है। गाइस, कैन यू ऑल्सो शेयर ओवर द यूट्यूब चैनल? दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। तो सर्टिफिकेट आपको डे आफ्टर टुमारो मिलेगा। राइट, इफ एनीवन ऑल्सो वांट टू एक्सप्लोर इन डेटा साइंस, नीड काउंसलिंग, सेलेक्ट यस एंड फिल कोर्स नेम। जो आप कोर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। काउंसलिंग टीम विल कनेक्ट यू with the more information about the program. That is completely depend on you. That is there is no pressure from my side. आपको क्या करना है, आपको इंश्योर करना है। विल प्रोवाइड ओनली मेंटरशिप, विल प्रोवाइड ओनली गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हो। ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डेटा डोमेन, yes, there is a good platform. We'll try to deliver our 200%.
हमारा जुनून ऐसे ही रहेगा आपके साथ। अगर आप एनरोल होना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम। ठीक है। नहीं चाहे तो कुछ भी करना चाहे, जिस भी सेक्टर में आप करना चाहते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। यू नीड टू इंश्योर कि उस सेक्टर में आपको क्या करना और उस पे फाइट मारना शुरू कर देना है, विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी सिंगल डिले। आई होप कि कैन यू प्लीज शेयर गाइस फॉर्म लिंक टू द यूट्यूब चैनल एज वेल। यस, आई होप कि सभी ने फॉर्म फिल कर दिया होगा। If anyone have any query, doubt, concern, please text me. I am ready to reply each and every person. I am seeing all your review messages and all. If you have any query, if you have any concern, I am ready to take, I am ready to reply. Yes, if you want MySQL with and Power BI, both are the thing. Also, there is huge opportunity. अगर आप केवल MySQL और Power BI करना चाहते हैं, yes, definitely you will do that. There is also very huge opportunity for MySQL and Power BI as well. Yes, sir. Any other latest Hindi news? Okay, definitely, sir. I will try to do the same. And also, I would like to take one question. If you want to increase, suppose there is the option you can see here. आपको यहाँ पे लोअर अपर लोअर यानी आपको अपर केस करना है, यू विल ऑल्सो डू द सेम अपर केस, सारा अपर हो जाएगा। इफ यू वांट टू चेंज दिस वन एज अ लोअर केस, आप इसको भी सारा एज अ लोअर केस कर सकते हो। आप चाहते हो सबको कैपिटलाइज करना, तो यू विल सी ऑल द थिंग्स ईच वर्ड्स, यानी दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू बंदास मनीष। तो सॉरी मनीषा जी, you will do all these things over here. I hope this session is very useful for all of you. I hope I will deliver each and every part. अगर कोई नॉन टेक बैकग्राउंड से है या टेक बैकग्राउंड से, टेक बैकग्राउंड को थोड़ा सा प्लस होता है, जो नॉन टेक बैकग्राउंड से है वो भी कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बीए वाला नहीं कर सकता है, बीकॉम वाला नहीं कर सकता है, एवरी वन डू द सेम। जब जागो तभी तभी सवेरा है। जो आप करना चाह रहे हो कर सकते हो, क्योंकि बीए करने के बाद जॉब पाना इज दैट वेरी डिफिकल्ट, राइट? यू नीड टू मूव इन टेक्नोलॉजी डोमेन। थोड़ी सी टेक्नोलॉजी पे आपको मूव करना है, स्विच करना है, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग सीखने में समय लगेगा, ठीक है, दैट इज फाइन। थोड़ा सा प्रोग्रामिंग वीक रहेगा तब भी चलेगा, बट जो बेसिक थिंग्स है, अदर थिंग्स, यू नीड टू स्ट्रांग ओवर देयर, राइट? Data nothing but information. Okay, I hope there is okay. Yes, who have filled the form, they are eligible to get certificate. Make sure कि आपका फॉर्म पे फुल नेम अवेलेबल होना चाहिए, right? And your certificate will be delivered by day after tomorrow, all right? Over the mail, over the WhatsApp as well. Or you will also get your certificate from our website. Just you need to visit skilledup.tech. You need to go on down section, नीचे जाओगे, डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा। जो आपने ईमेल आईडी दिया है, यानी पावर बीआई यहाँ पे आ जाएगा, आपके प्रोग्राम का नेम, ठीक है, पावर बीआई वर्कशॉप आप डालना, यहाँ पे ईमेल आईडी डालना, सो सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे, आपकी सर्टिफिकेट शो हो जाएगी, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो और लिंक्डइन पे शेयर भी कर सकते हो। दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू, राइट? इफ एनीवन वांट टू व्यू आवर वेबसाइट, प्लीज गो अहेड, विजिट द सेम, एंड आप गो थ्रू कर सकते हो। अनदर थिंग,
If you want to connect with me on LinkedIn, definitely you will also connect with me on LinkedIn. I am available. I will accept your request as well. If you want, go ahead, send me request. I will accept you. If you want to share your thought, your review, that is also most valuable for me. I am also ready to accept this. Right? Anything else, guys? Any other thing? आई होप कि आप लोगों ने फॉर्म को फिल कर दिया होगा. अगर कोई फॉर्म नहीं फिल किया होगा तो आई एम सॉरी, देर इज अ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द सेम. अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है, यस, सर्टिफिकेट विल बी डिलीवर बाय डे आफ्टर टुमारो. If anyone want to connect with me, there is a official number. Can you please guys share official number with all? There is a, please note down as well, guys. I would also like to tell 98188 90050. 98188 90050. Is that our official number? Just you need to connect over there, right? If you want any discuss, right? Okay, guys. I hope is that clear to all of you. A link. Okay, okay. Give me 1 second. I will share link with you all. Don't worry. Just I need to share over the YouTube. Let me check. Yeah, please check, guys. I would like to paste here. I hope everyone's get the review link, right? Just you need to review the same. Review is that means you need to fill the same, right? Any other thing, guys? Any other query? Any other doubt? Any other concern? Please let me know. I am happy to take your question, your doubt, your concern, anything. I am very happy to discuss each and every part. Please go ahead. Tell me what you want. Do you need discuss, or you also need to, if anyone would need to directly connect with me, I am also happy to discuss all of you. Okay, आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझसे बात नहीं कर सकते. I am also connect with you for your better understanding, for my better understanding, and any other thing, right? Okay, thank you so much then, guys. I would like to conclude the session. Thank you so much. Thank you for joining this session. I am very happy to see all of you. Thank you for your time. Good day. See you very soon. Bye bye. Take care.